Bismillahirrahmanirrahim. This is Sobia Zahid. I am your English teacher. We will learn here unit number 3, the lucky leaf. In lucky leaf, dear children, you will see a story of a little girl named Rahila. Rahila has 4 bangles in her hands and she is playing in a garden. She sees a leaf falls from a tree and she runs after this leaf. In this process, in this activity, she lost her one bangle. How she could find this bangle? Is she able to find her bangle or not? We will see this story in the chapter. So, dear children, open your books at page number 18. This is unit number 3, the lucky leaf. Let's start reading. Unit number 3, the lucky leaf. Words to know: cry. Cry mean rona. To shed tears because you are upset or hurt. Lost, gone missing. गुम हो जाना किसी चीज़ का. लॉस्ट मीन गुम हो जाना. गॉन मिसिंग. राहीला इज क्राइंग. शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल. डोंट क्राई राहीला, सेज मम. गो एंड प्ले. राहीला गोज आउटसाइड. शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल. Rahila counts the leaves on the tree. 1, 2, 3, 4. One leaf is falling from the tree. The wind blows. It carries the leaf up into the air. The leaf is now in front of her. बेटा इसमें आपने देखा कि राहीला रो रही थी because she lost her golden bangle. तो उसकी मम्मा उसको कहती हैं डोंट क्राई राहीला, रो मत, लॉन में जाओ, गो एंड प्ले, और खेलो वहाँ. जब वो बाहर आती है तो वो ये वुड एप्पल ट्री है उसके पास बैठ जाती है और यहाँ से हवा की वजह से जो लीव्स गिर रहे हैं उनको काउंट करना शुरू करती है. और वन लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. उसके सामने ट्री से एक लीफ गिरता है. द विंड ब्लोज, क्योंकि हवा चल रही है, हवा की वजह से वो लीफ उड़ना शुरू हो जाता है और हवा उस लीफ को आगे आगे ले चलती है. द लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर. अब वो लीफ उसके सामने है. राहीला स्टैंड्स अप. द विंड स्टार्ट्स अगेन. The leaf dances up and down, left and right. It turns and turns. It spins like a top. It climbs high above the roof. अब वो ये सारी मूवमेंट्स ये उस लीफ की हैं जो विंड की वजह से मूव कर रहा है. लीफ डांसेस अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे होता है, लेफ्ट एंड राइट होता है और आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है. और वो इस तरह से मूव हो रहा है लाइक अ टॉप. और इट क्लाइम्स हाई अबव द रूफ, इवन के ये रूफ के ऊपर चला जाता है. व्हाट फन, सेज राहीला. राहीला कहती है कि कितना मज़ा आ रहा है. राहीला रन्स आफ्टर द लीफ. इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर. वो आगे और पीछे राहीला के वो लीफ मूव करता है. सून द लीफ फॉल्स इनटू अ होल. इट इज़ एट द साइड ऑफ अ रोज बुश. राहीला पिक्स अप द लीफ. शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट. राहीला laughs. She takes the bangle and the lucky leaf to show mum. अब देखिए बेटा, वो लीफ के साथ प्ले कर रही है तो वो खुश हो गई है. जैसे जैसे लीफ आगे आगे मूव कर रहा है, राहीला उसके साथ साथ मूव कर रही है. तो अचानक लीफ एक होल में गिर जाता है
अब राहीला देखती है, वो जब उस लीफ को उठाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसकी गोल्डन बैंगल पड़ी होती है। अब वो उस बैंगल को लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसको शी टेक्स द बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो मम। तो वो उस बैंगल को और लकी लीफ इसलिए क्योंकि उस लीफ की वजह से शी फाइंड्स हर बैंगल, तो वो इसलिए उसको लकी लीफ कहती है। तो वो अपनी मम्मा को लकी लीफ एंड बैंगल दोनों चीज़ें दिखाने के लिए खुशी से भागती है। सो दिस वॉज योर टेक्स्ट अबाउट द लकी लीफ एंड वी हैव टू डू द बुक वर्क। बुक वर्क के लिए आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। इट इज़ पेज नंबर 20। कंप्रीहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आपने ये बुकलेट के ऊपर करने हैं, वो बुकलेट पे हम करवाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है लुक एट द पिक्चर्स इन द लेसन, राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा आपने देखा कि आप जब रीड कर रहे थे तो आपकी रीडिंग के साथ साथ फुल पिक्चर्स जो हैं वो दी हुई हैं पूरे चैप्टर की, तो वो फुल एक पिक्टोरल स्टोरी भी बन रही है। तो हमने उन पिक्चर्स में से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हमने आंसर करना है। नाउ वी विल सी व्हाट आर दीज क्वेश्चंस। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑन द रोज बुश। जब आप इसको पीछे व्हेन यू सी द पिक्चर यू विल गेट द आंसर। देयर आर डैश ऑन द रोज बुश। व्हेन यू काउंट द फ्लावर्स you will see they are 19. So you will write there are 19 on the rose bush. Second is how many wood apples are there on the grass. इसके क्वेश्चन के लिए बेटा whenever you have to write something you have to draw a line on your book, then you people will write the answer. So here I am drawing the lines just before the questions so I can write easily the answers. Second question हमारा था how many wood apples are there on the grass. When you count the wood apples then you will see that they are 6. You will write the answer 6. How many bangles does Rahila have? Rahila have 4 bangles. How many birds are on the tree? There are 3 birds. How many pots are near the wall in the picture on page number 18? They are 4 in number. So now move on. Question number 3. Fill in the blanks. Dash is crying. Who was crying? It is Rahila. Yes, you are right. Rahila is crying. One dash is falling from the tree. One leaf is falling from the tree. The wind dash blows. The leaf dances dash and down dash and right. The leaf dances up and down, left and right. Last is Rahila runs after the leaf. Next exercise beta आप लोगों की it is on your booklet, so we will do this exercise on booklet, and on book we have to do
Listening and speaking. इसमें question number 1, listen to the sounds and repeat them aloud. Say the words. CL, clap, click, class. You will write over here clock. CLOCK. SL, slam, slap, slow, slippers. Slippers. CH, ch sound, ch. Chip, chim, check, chair. DR, drop, dream, dry, dress. And from where you will get these words? You will get these words from the pictures given below. These are clock, slippers, dress and chair. Now we have an activity on page number 23. We use these counting words, read these numbers aloud, learn to write them, count the items in the boxes and write the numbers in words. And they are given in this word box, and we will pick these words from this box and use these words. Now I am going to read, count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So we will write over here 20. 20. In the next diagram, when you count these objects, you will find that they are 16. 16. Number of cups is 19. 19. Number of balls is 15. You will get all these words from the word box. Number of pens is 13. 13. And the last is number of birds, which are 11. You can count and then write 11. So this was your bookwork of unit number 3, the lucky leaf. Now we are going to do booklet work, which is given in your booklet. So open your booklets. We will do some MCQs and short questions and also the questions. This is your bookwork from your book. It is given in your booklet. So this is your worksheet. I will do it for you over here. Unit number 3, the lucky leaf. Part C, इसका preposition है. A preposition shows the position between one noun and another. Complete the following sentences with appropriate preposition given in the box below. Here you are given some prepositions. You have to use these prepositions according to the sentence. First of all you have to watch the picture. You have to see the picture very keenly. It is given in your book.
A police officer is standing dash of the truck. A police officer is standing in front of the truck. In front of, when you see the picture, you can write the answers accurately. There are 8 crows dash the branch on the tree. On the branch, you will use the preposition on. There are 3 dogs under the truck. Under the truck. There are 4 goats dash the truck. In the truck. In the truck. Because you can see some goats in the truck. There are 7 women dash the truck. At the side. At the side of the truck. Side of the truck. 1 tree is dash the truck. 1 tree is behind the truck. So this was your worksheet. बेटा आपने जो कुछ यहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं इसको अगेन एंड अगेन घर पे प्रैक्टिस करें, किसी भी नोटबुक पे इसको लिख के देखें. नाउ वी विल डू some words and meanings. This work you have to do in your notebook and question answer on your booklet. I will read these question answers for you over here. Here I have some words and meanings which you have to do on your notebook. Cry, to shed tears. Cry, to shed tears. Lost, gone missing. Spin, to turn. You have to ready the page very accurately, very neatly, and you have to write these words meanings and word sentences very neatly. Word sentences, you have to make sentences on your own. These sentences should be very accurate and use all those words of them, you know the spellings very well. Here are given some samples of the sentences, but there is no need to learn these sentences. You can make your sentences on your own. First word is fly, second is roof and wind. Fly mean udna, roof is the upper part of the house and wind is air. Fly, birds fly in the air. You can make any other sentence also. Roof, Ali is on the roof. Wind, the wind is blowing. This work should be done in notebook and question answer are given on your booklet. You have to do these question answers on booklet. What does Rahila lose? What does Rahila lose? You know very well that Rahila loses her golden bangle. Rahila loses her golden bangle. Second question is, where does Rahila sit? Rahila sits under the wood apple tree. What does Rahila do? She counts leaves on the tree. Where does the leaf fly? The leaf flies up into the air. Question number 5 है, where does the leaf fall? The leaf falls into a hole. Last question है, why does Rahila laugh? Answer इसका है, Rahila laughs because she finds her golden bangle under the leaf. So this was your whole lesson. In this lesson we learn how to read well, how to write well. In this chapter we learn how we will use
some new words and some new situations. I hope you learn this lesson very well, but I want from your side that you people will read and write the answers.